symptoms deterioration by 41% compared with tamsulosin alone after 4 years of age. So, MTOP and combat studies both have concluded that combination therapy of tamsulosin and 5-alpha reductase inhibitor, that is dutasteroid, has an excellent results in prevention of symptom progression, prevention and progression to surgery, and improvement in IPSS. Combination therapy is dutasteroid with tamsulosin, available by the name of Maxflu D 0.5 divided by 0.4 milligram. It's an easy dosing one at night. Here again, you can see the efficacy of combination, the different drops when given alone. This is the tamsulosin that shows improvement of 1 to 1.5% in maximum flow rate, with dutasteroid of about 1.5 to 2. But the combination of both shows up to 2 improvement in Qmax level. Qmax is actually the urine flow rate, where you measure the maximum flow rate at the mid of the stream, uh, and normally it is about 15 ml per second. That is 15 ml per second. And if it is less than in a patient with urinary tract symptoms secreted not prostate, the Qmax is less than 10. And if you give this combination therapy, so the Qmax is increased by 2 to 3%. Again, here you can see the efficacy of combination of dutasteroid with tamsulosin therapy significantly reduce prostate volume. Like how it reduces the prostate size or prostate volumes, as already I mentioned, is this dutasteroid, which is a 5-alpha reductase inhibitor, blocks the conversion of the tamsulosin. Blocks the conversion of testosterone to dihydrotestosterone, and dihydrotestosterone is a potential factor for prostatic growth. So that is blocked. Prostate is deprived of the active form of testosterone. So the prostate, with time, the prostate size decreases and it shrinks. That is apoptosis, with the loss of the active form of testosterone. So by 12th month, here you can see that there is a decrease in size of the prostate. In after 2 years of age, after I mean 2 years of therapy, uh, the reduction is minus 30%. I mean the prostate size decreases by 30%, right? If the prostate size decreases and the prostate size decreases, so the static component will be reduced. And if the tamsulosin blocks these alpha receptors, so those smooth muscles get relaxed, the urethral pressure decreases. So there is ultimate, the result is improvement in the urine flow rate, Qmax, and patient IPSS improvement. So in short, it has got an excellent result, this combination therapy. Alpha blocker relieves symptoms rapidly. 5-alpha reductase inhibitor disease prevent disease progression by reducing the prostate volume, prostate size, and combination therapy both prevents disease progression and relieves symptoms. Rationale for early versus delayed initiation of combination therapy. Delayed versus early initiation of alpha blocker, so greater symptoms and severity for longer time. Delayed versus early initiation of dutasteroid, absolute increase in the risk of acute urinary retention and BPH progression to surgery, not prostate progression to surgery. But early initiation of alpha blocker and dutasteroid in combination, rapidly reduction in symptom severity, absolute reduction in risk for adverse outcome. So if you find a patient with moderate IPSS with bothersome LUTS, so it is safe and it is good enough to start him on combination or alone therapy with alpha blocker, or combination of alpha blocker with dutasteroid. Urologist referral should be considered if you find a patient with severe symptoms and who does not respond to this pharmacotherapy or combination therapy. He should be referred to a urologist. Or
when you go for digital rectal examination, it's abnormal. You find a nodule or a hard or a much large enlarged prostate, then he should be referred to a urologist. In complicated BPH, like a patient having a recurrent urinary tract infection, hematuria, urinary retention, or obstructive nephropathy, or bladder stones, so he's having complication and he should be referred on time to a urologist. Patient with rest PSI level, again, there is a higher risk of malignancy, should be referred to a urologist. And a patient who fails to respond to drug treatment for enlarged prostate, or the patient is non-compliant to medication, so he should be referred to the urologist. So with this, I end my talk, and I thank you all for your patience for listening to me. And I hope you might have understand. And if there is any problem, any question, you are most welcome. Any question, dear audience, dear colleagues? If Well, if anybody have any question, he or she can unmute his mic and ask questions. dear colleagues, if there is any question, you are most welcome. Well, sir, I believe it was a very comprehensive and informative session. Mic and can ask questions. सर मेरे ख्याल में सबकी माइक ऑफ है तो काइंडली बस But they can unmute their mic. सर आई बिलीव काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन था, और एक चीज़ जो इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपने एलेबोरेट की, तो ख़ास तौर पे शायद फिजिशियन के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो डायग्नोसिस के रेफरेंस से वो आपने काफ़ी डिटेल के अंदर इसमें एक्सप्लेन किया. आई एम श्योर दैट विल रियली बी हेल्पफुल फॉर ऑल द फिजिशियंस इंशाल्लाह. Thank you, sir. Thank you so much. It was a very nice and comprehensive presentation. I am really thankful to you, sir. Thank you, dear Ata. Well, I guess there are no more questions. Well, sir, Dr. Fazal Ali Saab, on behalf of CCL, I'm really grateful to you for sparing your valuable time for this very informative session. And I'm sure we will also request you again for these sessions, और पर्टिकुलरली BPH, LUTS और OAB के ऊपर सर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली एक तो पेशेंट जो है वो भी इसके ऊपर अवेयर नहीं है, और फर्दर ये कि वो उसको पता नहीं होता है कहाँ जाना है. इस तरह के मसले को लेके मुझे डॉक्टर के पास जाना भी है नहीं. तो CCL बीइंग योर पार्टनर, हम इसकी अवेयरनेस के ऊपर भी सर हमने काम स्टार्ट किया है. ऑल्दो हम इस पर पहले से काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हम इस जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के ऊपर भी हम काम करें, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह की प्रेजेंटेशन सिंपल लोकल लैंग्वेज के अंदर, जिसमें जनरल पब्लिक हमारी ऑडियंस होगी, उस तरह के सेशन भी सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे करवाएं, सो दैट कि वो जो लोग इस तरह के सिम्टम्स में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, शायद ये समझा जाता है कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, एज के साथ साथ ही हैं, तो हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. तो उन तक भी हम ये वाले मैसेज पहुंचाएं, आपकी स्पीच पहुंचाएं, सो दैट कि उनको पता हो कि यार ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका एक बाकायदा इलाज मौजूद है, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवा के वो अपना मेयार ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं. तो उस तरह के प्रोग्राम के लिए भी सर आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप लोगों ने इस वंडरफुल सेशन के लिए टाइम निकाला, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस तरह के और सेशंस हम ज़रूर अरेंज करवाएंगे यूरोलॉजिस्ट की हेल्प से.
और ये जो आजकल कोविड की वजह से वेबिनार वाला जो सिलसिला है इसको हम फर्दर इंशाल्लाह परसू करेंगे, ताकि हम नॉलेज शेयरिंग जो है इसको कंटिन्यू रखें। सर थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you. No more. सर डॉक्टर फजल अली साहब, सर अगर आप कुछ कहना चाहें आफ्टर प्रेजेंटेशन। अच्छा, थैंक यू CCL। आई मीन इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आप लोग ये एकेडमिक्स पे काम कर रहे हो, तो आई मीन इट्स गुड फॉर ऑल आवर कोलीग्स एंड फॉर जूनियर्स, फॉर ऑल स्पेशलिटी पीपल एज वेल। एंड जिस तरह आपने बात की है कि कम्युनिटी के लिए भी इस तरह वो चाहिए, तो आई थिंक इट्स एन ये अच्छा इनिशिएटिव, एक अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह स्टार्ट होना चाहिए ताकि लोगों को पता हो। And again, we are thankful for the CCL for supporting these academic activities, and we hope कि आप लोग फ्यूचर में भी इस तरह ये academics जारी रखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, वी आर रियली ऑनर्ड एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर।